3 patients die. That's it. So what are the risk factors? For your sepsis, you are mild infected. You have a infected boil or a pimple or a chest infection, and it gets worse in possibility of your getting admitted to a hospital and dying. So if you are elderly, that is age more than 65, if you are immunocompromised, the chemicals, the white cells of your blood, they release these chemicals to be able to fight the infection. So now what happens, I'll come to that a bit later, but first let's see how serious the problem is. By 2050, sepsis is going to kill more patients than cancer or heart attack or strokes put together. And India, it's obviously even more of a problem because the infection control practices in hospitals are not very good. Misuse of antibiotics across you can go to a chemist and they can give you antibiotics. So that all, and the late admissions to tertiary care hospitals, that all contributes to much higher mortality than the Western data what you see. So people treat themselves at home. Half the time chemists will do infection. It can happen because of bacterial infections. It can be viral infections like what we saw in COVID infections, or it can be even fungal infections like mucormycosis we saw during the COVID times. And one-third of the patients died within a month of admission to the ICU. And this was a large study which we had done in India. It's called INDICAP study. It was covered, I am the second author of this paper. And in 2018-19, at 4 different time points in the year, we surveyed in 130 hospitals, 4,600 patients in India. And you have repeated hospitalizations, because of which you get hospital-acquired multi-drug resistant organisms. All this contributes to higher death rate. What is the status of sepsis in India? So this is what dysregulated host responses. That means there is a balance between inflammatory and anti-inflammatory chemicals. When the balance is achieved, you recover. The balance is not achieved, then you can die and have while they were in the hospital. So more than 50% of the patients, half the patients in the intensive care unit in India were already infected. And most of them were more than 2 antibiotics. So that brings me to the adjuvant therapy. See, mortality, as I said, despite the best advances in medical therapy, has remained high. That is the time when we look at adjuvant therapy. That means you given the traditional sepsis therapies, antibiotics, source control, organ support, and so on. And then you come to adjuvant therapies which help the patient to recover. So as I said initially, you have increased inflammatory markers like cytokines and chemokines. Thank you for your attention, and I'm quite happy to answer your questions. आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट जब यूज होता है इसका एक अप्रूव इंडिकेशन रहता है अप्रूव इंडिकेशन में यूज होता है यूएस एफडीए अप्रूव करता है डीसीजीआई अप्रूव करता है सो कुछ प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्ट आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है मान लीजिए आपको एसिडिटी हुआ आप एंटासिड लिया एसिडिटी गया कुछ प्रोडक्ट रहता है विटामिन जैसा रहता है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहता सिमिलरली थाइमोसिन अल्फा इज द प्रोडक्ट व्हिच इज द इम्यूनोमोड्यूलेटर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है इट इज नॉट डायरेक्टली अटैकिंग दैट पैथोजन ये आपका जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होता है जो आपका एंटीबायोटिक होता है जो आपका माइक्रोब्स को मार डालता है वो प्रोडक्ट नहीं है इज द एडजॉइनिंग थेरेपी जो डॉक्टर साहब बोले सो हम लोग रिसर्च में हम लोग इसको रीपोजिशन करते हैं that any fungal infection, any antibacterial infection और कोविड लाइक सिचुएशन में जब हमारे पास बहुत ज्यादा रास्ता नहीं रहता ट्रीटमेंट का why we don't use this adjoining therapy to save the patient and we have got the success and that is why it is जो सीवियर एंड मॉडरेट पेशेंट उसको एडजॉइंट थेरेपी देके हम बचाने का कोशिश करेंगे ऑलरेडी वी हैव गॉट सम सक्सेस गुड सक्सेस एंड हम लोग उनका हॉस्पिटल दिन के पहले इन्फेक्शन में काफी स्टडीज हैं पब्लिश्ड पेपर से मैंने कुछ दिखाए थे हिंदुस्तान में भी स्टडी हुआ है डीसीजीआई ने अप्रूव किया उसके पहले स्टडी हुआ है हमारा भी डेटा कलेक्ट हो रहा है इसलिए बेनिफिशियल इफेक्ट कोविड-19 में है पर कोविड-19 के लिए ही अप्रूव था इसलिए अब वो सेप्सिस के लिए जो अप्लाई किया है
वो हम इस्तेमाल करेंगे जैसे 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 अप्रूवल आ जाता है वो, और फिर उसको एनालाइज भी करेंगे स्टडी में कि क्या फायदा है। नहीं, इसकी कोई नहीं। तो मैं देखिए, मैं बच्चों को ट्रीट नहीं करता, बट ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है। न्यू बॉर्न्स में यूज नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी पीडियाट्रिक पेशेंट में होते हैं।